A very good morning, my dear students. In previous video, we had just started the chapter 5, therapeutic approaches. Okay, this chapter is basically related to the therapy or the treatment methodology or the treatment modality. Okay, and in previous chapter we had discussed the concept of psychotherapy, which is a interactional relationship between the client and the therapist. Client, a person, a individual who seeks helps, and a therapist who is trained and the educated for giving that type of assistant or that type of treatment. ठीक है, so basically हमने वहाँ पे अंडरस्टैंड किया सम पॉइंट्स, सम कॉमन फीचर्स जो कि ऑल दी थेरेपीज़ में एसेंशियल हैं. आफ्टर दैट here are 10 points which are explain the aims of psychotherapy. What are the aims, क्या क्या टारगेट, क्या ऑब्जेक्टिव होता है ड्यूरिंग थेरेपी. एंड आफ्टर दैट द alliance, therapeutic alliance, which is also known as the therapeutic relationship. So here in a therapeutic relationship there are three major properties: the unconditional positive regard, the confidentiality, and the empathy. These 3 points are very much important in a therapeutic alliance. And in today's we started the types of therapies. What are the types of therapies? And basically we are comparing the major 3 therapies on the basis of few dimensions. ठीक है, few points हैं, few क्या कह सकते हैं dimensions हैं जिनकी basis पे हम compare करेंगे all the 3 major therapies को. So type of therapies are so many type of therapies. For example, the psychodynamic therapy, the behavioral therapy, the cognitive therapy, humanistic and existential therapy, the biomedical therapy, and the last one is the alternative therapies. ठीक है, सो these type of therapies हैं जो आपको इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू पढ़ना है. बट द मेजर 3 therapies are the psychodynamic, and the behavior and the cognitive are emerged together. So the name is the behavioral cognitive therapy, and the humanistic and the existential also are collaborated with each other. So the humanistic existential therapy. So these 3 therapies are basic or the major therapies: the psychodynamic therapy given by Freud, then the behavioral and the cognitive therapy, and humanistic and the existential therapy. So in 3 basic therapies के basis पे कुछ parameters, कुछ dimensions पे हम compare करेंगे all these 3 therapies को. So let's continue. Let's start first. So these are a comparative chart which explain the parameters, which are 6, the causes comes into existence by causes किस तरह से manifest होते हैं in the behavioral level, and the treatment, how we treat the disorder, and the nature of relationship, किस तरह का therapist and client के बीच में relationship होना चाहिए, and the next is chief benefit to client, and the last one is the duration. ठीक है, सो इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हम ऑल दी 3 थेरेपीज़ को कंपेयर करेंगे. द ऑल द 3 थेरेपीज़ आर साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, एंड द एग्जिस्टेंशियल और द ह्यूमनिस्टिक. And so let's start with one parameter. The first parameter is the cause. So basic question is here is that what are the causes? Why individuals show abnormal behavior? What are the behind causes? What are the underlying factors which manifest the symptoms of the abnormal behavior? So according to psychodynamic, the Sigmund Freud views, according to this theory, as you understand the theory, here are so many structure of personality, then the dynamics of personality, what are the stages of psychosexual development, and the defense mechanism. So you can able to understand what is the therapy in what is the theory in detail. And on the basis of this theory, the theory which is given by Sigmund Freud, they develop basically 2 technique, the free association and the dream interpretation. ठीक है, उन्होंने ये 2 थेरेपीज़ इंट्रोड्यूस की है, द फ्री एसोसिएशन एंड द ड्रीम एनालिसिस, और यू कैन से द इंटरप्रिटेशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन. सो उनका जो पूरा थ्योरी का व्यू था, उनका जो जिस था, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उसके बेसिस पे साइकोडायनामिक्स जो बिलीव करते हैं, साइकोडायनामिक्स अप्रोच को जो बिलीव करते हैं, सो द प्रॉब्लम इज अराइज व्हेन our psychic sources, the energy of our psyche
विच आर ईड, ईगो एंड सुपर ईगो. सो इनके बिटवीन जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, दैट विच इज नोन एज द इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इंट्रा साइकिक दैट्स मीन बिटवीन द साइकिक फोर्सेस, दैट्स मीन द ईड, ईगो एंड द सुपर ईगो. इनके बीच जब इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, वो हमारा मेन कॉज होता है हमारे मिसबिहेवियर का, या हम कह सकते हैं कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर हम डेवलप करते हैं. सो कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द साइकी ऑफ द पर्सन और द डायनामिक्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ साइकी. ठीक है, डायनामिक्स दैट मीन द कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे जो हमारा ईगो और सुपर ईगो के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दिस इज द बेसिक रूट, दिस इज द बेसिक कॉज फॉर डेवलपिंग एबनॉर्मेलिटीज. ओके, अब ये तो हो गया साइकोडायनेमिक. नाउ मूव टू द बिहेवियरल एस्पेक्ट. बिहेवियरिस्ट क्या मानते हैं? दे बिलीव बेसिकली फॉल्टी लर्निंग ऑफ बिहेवियर एंड कॉग्निशन. दे बिलीव ऑल द बिहेवियर वी लर्न through the different learning methods, through the different techniques, as you understand the classical conditioning, operant conditioning and the modeling and the social learning theories also. So they believe all the behavior are learned. So if all the behavior are learned, so why not abnormal? Abnormal behavior is also learned at the same manner as the normal behaviors are learned. So faulty learning, when we are not learning in a right way, when we are not learning the right things, then we are basically doing the faulty learning. So faulty learning of behavior and cognitions are responsible. Cognition, that's mean the faulty belief system, faulty thoughts. ठीक है, irrational thoughts which are not logical, which are not appropriate. These thoughts, these behaviors, these maladaptive behaviors are basically responsible for developing psychological problems or the abnormal problems. So behaviorists view that the abnormal behavior is basically because of the faulty learning, which is also known as maladaptive learning on the or the in a cognitive perspective, this is the irrational thoughts or the irrational belief systems. Okay, now move to the existential. अब existential क्या believe करते हैं? They believe the problems are arise because of the person is not able to find out the meaning of their own life. ठीक है, they basically express, they want to express their own self. They want to becoming a fully functioning individual. They believe that. So when the person is not find the actual meaning of their life, the questions about the meaning of one's life and existence, if the person is cannot find out this, so they develop abnormal behavior, or you can say the abnormalities. Okay, so basically the person is self-actualized, they want to express their self, and if they are not able to, so they develop a disorders, or you can say in a different perspective, you can say if the relationship is not appropriate, the person is very much want to the communication system, a social system, when he not communicate properly, when he not express their self in a right manner, in a adequate manner, so they develop a faulty perspective and they develop abnormalities. So this is about the causes, this the first parameter. So psychodynamic believe the causes is the intrapsychic conflict, behaviorist believe the faulty learning behavior, the maladaptive behavior, existential believe the questions about the meaning of one's life and one's existence. Okay, now move to the second one. Causes comes into existence. How these causes can be find out, how these causes can be manifest in a behavior. So first of all, according to psychodynamic, unfulfilled desire of childhood, unresolved childhood fears. ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बेसिकली हमारे जो द साइकोडायनामिक थ्योरीज बेसिकली बिलीव दैट द अर्ली ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट, दैट्स मीन द अर्ली चाइल्डहुड, इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग अवर सेल्फ.
ठीक है, हम क्या हैं, क्या बन रहे हैं, हमारा जो पर्सनालिटी डेवलप हो रहा है उसमें बेसिकली ह्यूमन बीइंग का जो अर्ली एक्सपीरियंसेस है 0 to 5 ईयर का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। एंड उस टाइम पे अगर कुछ हमारा अनरिजॉल्व प्रॉब्लम है, यू कैन अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ द फिक्सेशन एंड द रिग्रेशन। इफ़ द पर्सन इज फिक्स्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, एंड वहाँ पे अगर उनको कुछ अनफुलफिल्ड उनके डिज़ायर्स है, डिमांड्स है, which is not appropriate, which is basically related to the shame feeling, guilt feeling, or the sexual feeling, aggressive feeling, which is the basically related to the negative emotions or the guilt feeling, ठीक है। so वो unfulfilled desire of childhood, unresolved problems और unresolved fears जो हैं, जो उस स्टेज पे नहीं रिजॉल्व हो पाए, they are basically responsible for developing this type of causes। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट का जो रूट है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, जहाँ से वो इमर्ज हो रही है, दीज आर बेसिकली अनफुलफिल्ड डिज़ायर और अनरिजॉल्व्ड फियर ऑफ चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू psychodynamic perspective. Now move to the behavioral. So faulty conditioning patterns and learning thinking and belief, ठीक है। बेसिकली वी लर्न थ्रू द पनिशमेंट एंड द reinforcement. सो व्हेन द फॉल्टी पेरेंटिंग जब होती है, जब फॉल्टी कंडीशनिंग हो रही है, व्हेन वी आर सोशलाइज, जो जिस टाइम पे हमारा सोशलाइजेशन चल रहा है, जिस टाइम पे हम लर्न करते हैं, हम अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे हमने फॉल्टी कंडीशनिंग की, कंडीशनिंग इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग, तो जब हमारी फॉल्टी कंडीशनिंग हुई, हमारा एसोसिएशन जो हो रहा है बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, वो अगर फॉल्टी वे में हो रहा है, और जब हम किसी नेगेटिव चीज़ से हमारा कनेक्टेड हो जा रहा है, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेल रिंग एंड डॉग एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू पैवलव का जो एक्सपेरिमेंट है। सो जब आप उसको इमेजिन करो, अगर आपका ये जो पेयरिंग है, जो एसोसिएशन हो रहा है बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स, ये अगर फॉल्टी मैनर में हो रहा है, किसी निगेटिव चीज़ से आप एसोसिएटेड कर जा रहे हो, सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फॉल्टी लर्निंग, ठीक है, और अ फॉल्टी बिहेवियर। So faulty conditioning patterns and learning, faulty thinking, the false belief system, the irrational thoughts, these are responsible for causes come into existence, ठीक है। Now move to the existential. Important on present current feeling of loneliness, alienations, sense of fulfilling of one's existence, ठीक है। when the person is think that they are completely alone and they don't have any support system, they have no meaning of life, so these type of thoughts, these type of feelings arise the questions related to their existence, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली बेस फॉर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ कॉज, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंस ऑन प्रेजेंट करंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, अगर आप करंट में लोनलीनेस फील कर रहे हो, एलिनेशंस की सेंस आप डेवलप कर रहे हो, फुलफिल ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, किसी के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड अगर आप लोनलीनेस एंड एलिनेशंस का सेंस डेवलप कर रहे हो, सो दिस इज द बेसिक कॉज फॉर डेवलपिंग द disorders, okay। Now next is treatment. So according to Freud, there are two techniques, as I already discussed with you, the free association and the dream interpretation. So in the free association and reporting of dream, these are two techniques, and elicit the thought and feeling of the client. फ्री एसोसिएशन के बेसिस पे क्या होता है, द क्लाइंट इज नॉट fearful, they express their own feelings, own desire, whatever they want to communicate, whatever they have in a mind, जो भी उसके माइंड में रैपिड आता जाता है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं कंटिन्यूस, उन्हें वो एज इट इज़ एक्सप्रेस करता है। दिस इज द फ्री एसोसिएशन। एंड इन अ ड्रीम इंटरप्रिटेशन, Freud believed that the dream is the only sign or the symbol which represent the intrapsychic conflict, ठीक है। ड्रीम के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं, हम ग्रेटिफाई करने की कोशिश करते हैं अपने अनडिज़ायर, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो है, अनरिजॉल्व फियर्स जो हमारा है, हमारा जो अनडिज़ायर्स वांट्स हैं, नीड्स हैं, मोटिव्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द वे ऑफ ड्रीम्स। The dreams is the symbolic representation of our intrapsychic conflict. So interpret to the client to help
himself or her to confront and resolve the conflict. ठीक है, तो उस टाइम पे जब वो एक्सप्रेस करता है तो वहीं पे उसे डिफरेंट और बहुत सारी चीज़ें हैं. जब आप डिटेल में पढ़ोगे थ्योरी, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ दीज टू थेरेपीज एंड हाउ द बेसिकली हाउ दे ट्रीट टू इंडिविजुअल. So this is the two technique which are used there for treatment. Now the move to the behavioral perspective. So alternative behavior and real contingencies, cognitive method which challenge faulty thinking pattern. ठीक है, some cognitive methods, for example the CBT, cognitive behavioral therapy, the Beck therapies, जिसमें हम बेसिकली उनके रैशनल्स पे क्वेश्चंस करते हैं, उनके फॉल्टी थिंकिंग को चेंज करते हैं, उनके इनरैशनल थिंकिंग को रिप्लेस करते हैं बाय द रैशनल थिंकिंग. सो अल्टरनेटिव बिहेवियर पैटर्न्स हम उनको लर्न कराते हैं, उनके बेसिकली जो फॉल्टी बिहेवियर है, मैल एडेप्टिव बिहेवियर है, उससे डिक्रीज करते हैं. एंड एट द सेम टाइम द अडेप्टिव बिहेवियर को हम मैल एडेप्टिव बिहेवियर को रिप्लेस कर देते हैं हम एडेप्टिव बिहेवियर से. ठीक है, मैल एडेप्टिव बिहेवियर को डिक्रीज कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अडेप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज कर रहे हैं. सो बाय अल्टरनेटिव बिहेवियर, रियल कॉन्टीजेंसीज के थ्रू, दियर रियल प्रैक्टिकल एक्शंस के थ्रू हम कुछ ऐसे चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसके बेसिस पे हम रिप्लेस कर पाते हैं उसकी फॉल्टी और मैल एडेप्टिव बिहेवियर को इन राइट बिहेवियर इन अडेप्टिव बिहेवियर. सो दिस इज़ अबाउट द बिहेवियरल थेरेपी में इस वे में हम थिंकिंग ट्रीटमेंट करते हैं, बेसिकली थॉट पैटर्न्स को उनको चेंज करते हैं, उनके बिहेवियर पे कॉन्टीजेंसीज को इंट्रोड्यूस करके, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करके उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं. नाउ मूव टू द एग्जिस्टेंशियल. सो इन एग्जिस्टेंशियल, पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट. बेसिकली अभी हमने जो थेरेप्यूटिक अलाइंस पढ़ा था, देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स, द एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी. ओके, सो ये तीनों जो पॉइंट हैं, दीज आर बेसिकली अराइज फ्रॉम द एग्जिस्टेंशियल व्यू. ठीक है, ह्यूमनिस्टिक एंड द एग्जिस्टेंशियल व्यू से ही ये तीनों टर्म्स जो है वो डिराइव हुए हैं. बेसिकली दे डोंट यूज एनी वन स्पेसिफिक टेक्निक. द ह्यूमनिस्टिक एंड द एग्जिस्टेंशियल ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट, they cannot use a specific technique for treatment. They believe the human beings are they have innate potential, they are innate resolving personality. ठीक है, they sort out their problems by their own. They only need a environment, they only need a conditioning, acceptance. ठीक है, अगर they want to say lots of things, they only need the listening person. ठीक है, if the person create an environment where the individual able to communicate their own ideas, their own feeling, they communicate freely their own self, and he gets or he or she gets a positive regard or acceptance, then he or she can able to treat their problem by their own self. ठीक है, so this belief is from the existential point of view. सो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे हम उसको जज नहीं कर रहे हैं, उसको एज इट इज़ उसकी बातों को सुन रहे हैं, लिसन कर रहे हैं उसको पेशेंसफुली एंड वार्मली. ठीक है, हम उसको वार्मनेस के साथ, जेन्यूनेस के साथ, पॉजिटिवली जब हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको नॉन जजमेंटल वे में उसको सुन रहे हैं. सो दिस इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली हेल्प द क्लाइंट for resolving their own problems. So this is the treatment methodology according to existential. Now move to the nature of relationship. ठीक है, अब तीनों का थेरेपीज के बेसिस पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द थेरेप्यूटिक अलायंस. विच काइंड ऑफ थेरेप्यूटिक अलायंस आर डेवलपिंग इन बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू साइकोडायनेमिक, because here the importance of the therapist is more in comparison to client. In a psychodynamic, the importance of therapist is more than in comparison to client. Client से ज़्यादा importance होती है therapist का. All things are in the hand of the therapist. So this is more directive method. Only the therapist understand the client better, and they only have to write to move the topic or decide the direction of the relationship or the explanation of the relationship. So according to a psychodynamic, therapist understand conflict better than the client,
and interprets the thoughts and feelings of the clients to himself or herself. Basically this type of relationship is basically a directive relationship, जहाँ पे थेरेपिस्ट जो होती है वो डायरेक्शन देता है क्लाइंट को, वो इंस्ट्रक्शंस देता है क्लाइंट को, ऑल द अथॉरिटी, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इन द थेरेपिस्ट हैंड. ठीक है. द क्लाइंट इज, जो क्लाइंट का रोल होता है एक्चुअली द पैसिव रोल ऑफ द क्लाइंट. यहाँ पे क्लाइंट जो है वो एक पैसिव रोल प्ले करता है. दे आर नॉट सो मच एक्टिव and they only communicate their problem and the therapist decide what to do. Therapist decide what is right in this scenario, in this context. So this is the psychodynamic perspective. Now move to the behavioral. So according to behavioral, there is therapist discerns faulty behavior and thoughts patterns and capable of finding out correct and adaptive patterns. So this is also a directive method, जहाँ पे बेसिकली जो थेरेपिस्ट होता है दे हैव अथॉरिटी एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द थेरेपी, द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप. They decide how the relationship is developed and how the client behavior can be changed. So वो decide करता है. So this is also a directive method. Now the existential one. So therapists provide a warm, empathetic relationship and clients feels secure to explore the nature and causes of his or her problems by himself or herself. So all the authority, all the responsibility of the client. The therapist play a role as a असिस्टेंट, एज अ गाइडेड. ठीक, एक गाइड की तरह वो रोल प्ले करता है, एक हेल्पर की तरह रोल प्ले करता है. दे डोंट हैव ऑल द अथॉरिटीज. बेसिकली दिस अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर द क्लाइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द थेरेपिस्ट प्ले अ पेरिफेरल रोल ऑल इन अ पैसिव रोल. ठीक है. थेरेपिस्ट जो होता है वो पैसिव रोल में होता है. दे ओनली क्रिएट अ इन्वायरमेंट विच इज वेरी मच वार्म, वेरी मच एम्पैथेटिक. ठीक है. एंड जेन्युइन, नॉन जजमेंटल, अनकंडीशनल. ठीक है. एक ऐसा इन्वायरमेंट सिर्फ वो क्रिएट करता है. एंड द क्लाइंट ओन क्रिएट द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप एंड क्लाइंट ओन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो दिस इज एग्जिस्टेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ चीफ बेनिफिट्स टू द क्लाइंट. अब इन थेरेपीज के बेसिस पे क्या बेनिफिट होना चाहिए, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू क्लाइंट. क्यों क्लाइंट ट्रीटमेंट लेगा भाई जब उसे कोई प्रॉफिट नहीं होगा. सो डेफिनेटली दे वांट टू डिक्रीज देयर सिम्टम्स, दे वांट टू बिकम नॉर्मल. दीज आर द एम्स ऑफ क्लाइंट. क्लाइंट जब आपके पास आ रहा है या क्लाइंट की फैमिली अगर आप क्लाइंट को आपके पास लेके आ रहे हो, सो डेफिनेटली वो यही एक्सपेक्ट करती है कि यू डिक्रीज द सिम्टम्स और आप उसे एक नॉर्मल कंडीशन में ले आओ, उसके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो. सो ऑन द व्यू ऑफ द psychodynamic, the emotional insight, the main objective of the psychotherapy, जो चीफ बेनिफिट होगा क्लाइंट को, which is the emotional insight. They understand their intra-psychic conflict better and what are the causes behind the intra-psychic conflict and how the resolution, how they solve the intra-psychic conflict. Basically this is known as a emotional insight. They develop a insight that means a client understanding conflict intellectually. ठीक है. इंटेलेक्चुअल बेसिस पे वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट को असेस कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा. आफ्टर दैट एक्सेप्ट द सेम इमोशनली. ठीक है. जो भी चीज़ें हुई हैं, दिस इज़ नोन एज द कन्फ्रंटेशन, जहाँ पे आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को, वो जो इमोशनल प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी उसे इंटेलेक्चुअली अंडरस्टैंड करो एंड एक्सेप्ट. यू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ एज इट इज़ एंड चेंज हर और हिज इमोशनल टूवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट. अपने इमोशंस को चेंज करो. यू एक्सेप्ट योर इमोशंस, यू एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स और योर कॉन्फ्लिक्ट एंड you try to change it intellectually. So this is the chief benefit by the psychodynamic approach. Now in a behavioral point of view, so institutive, adaptive or healthy behavior and thought pattern. So basically the chief benefit, the objective of this therapy is the जो client है
उससे उसका जो फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न था, जो मैल अडेप्टिव लर्निंग थी, उसको हम अडेप्टिव वन में रिप्लेस करेंगे. दैट्स मीन द क्लाइंट इज डेवलप instituting adaptive or the healthy behavior. They develop a healthy behavior, adaptive behavior, and a logical and the appropriate thought patterns, a profitable belief system, ठीक है, a value system वो डेवलप करता है. दिस इज द बिहेवियर पर्सपेक्टिव. नाउ अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनल ग्रोथ, this is very important. They believe the individual survive, individual express their self only because of they want to know the real meaning of their life, the fully potential or the fully functioning person. So the personal growth, the person is fully grow, they utilize their potential in a maximum level, they express their self freely. This is the chief benefit by the humanistic existential therapy. The client is able to understand their self better, they express their self better, and whatever they have potential, they express, they utilize their potential in a maximum level. This is known as the personal growth. To process of gaining increasing understanding of oneself and one aspirations, emotions and motive. They understand their emotions, motives and feelings better. This is the all about the existential. Now the last parameter is the duration. So as compared to these three, most longest therapy is the psychodynamic, because this took the several years. ठीक है, according to classical psychoanalysis, that basically 10 to 15 sessions. ओके, रिसेंट वर्जन अभी तक जितने भी साइकोडायनेमिक्स परस्पेक्टिव से ट्रीटमेंट चल रहा है, बेसिकली दे नीड सेवरल ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स लगते हैं. दिस इज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन थेरेपी, 10 to 15 सेशन, ठीक है, होते हैं इसमें बेसिकली. एंड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर, इन कंपैरिजन टू साइकोडायनेमिक, दिस टेक लेसर टाइम, ठीक है, ये थोड़ा सा डिक्रीज टाइम लेता है इन कंपैरिजन टू साइकोडायनेमिक. So this take few months, and existential is also needed to few months. So this is all about the duration. So this is all about types of therapy. We compare all the three therapies, the psychodynamic, behavioral and the existential, on the basis of 6 parameter, on the basis of 6 dimensions. ठीक है, this is all about this topic. Now our next topic is the steps in the formulation of a client's problems. ठीक है, a generalized view. All the therapies are follow few steps, some steps which are required for treatment. ठीक है, so सारी therapies एक common steps follow करती हैं, which are, let's see. So the clinical formulation refers to formulating the problems of the client in the therapeutic models and being used for the treatment. The clinical formulation has the following advantages. These are the basic 3 steps which are followed by all the therapy. And first step is the understanding of the problem. ठीक है, whenever the client is come in the session for the treatment, so basically first step is the rapid formation, and after that the basic assumption, the basic aim to understand the client problem, why the client is behaving in a wrong manner, why they develop so many symptoms related to the psychological problems. So basically understand of the problem, ठीक है, understanding of the client's problems. So the therapist is able to understand the full implication of the distress being experienced by the client. ठीक है, so different therapies में different चीज़ें यूज़ की जाती हैं for diagnosis. What are the problems, when why these are problems are basically developed, what are the behind causes. So this is the first step. Now second is identification of the areas to be targeted for treatment in psychotherapy. Basically the theoretical formulation clearly identifies the problem area to be targeted for the therapy, and thus if a client seek help for inability to hold a job and a report inability to face superiors, the clinical formulation in behavior therapy would state it as lack of assertiveness skills and anxiety. ठीक है, बेसिकली हम यहाँ एरिया फाइंड आउट करते हैं, विच एरिया ऑफ द लाइफ इज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम.
ठीक है, पर्सनल हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, रिलेटेड टू दी मैरिटल इशू हो सकता है, रिलेटेड टू दी करियर इशू हो सकता है. सो मेनी एरियाज आर हियर. ठीक है, पर्सनल में प्रॉब्लम हो सकती है. द कॉजेज आर इंटरनल ऑल्सो, एक्सटर्नल ऑल्सो. ठीक है, इट मे बी एक्सटर्नल और मे बी इंटरनल. तो कहाँ किस एरिया में बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है वो फाइंड आउट करते हैं इन द सेकेंड स्टेप. एंड आफ्टर दैट उस एरिया को हम सेलेक्ट करते हैं फॉर ट्रीटमेंट, फॉर चेंजिंग दी बिहेवियर. जहाँ पे हम फर्स्टली ट्रीटमेंट मॉडलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए. दिस इज दी सेकेंड स्टेप. And the clinical formulation in behavior therapy would state it as lack of assertiveness skill and anxiety. The target area have thus been identified as inability to assess oneself and heightened anxiety. ठीक है, so this is the example जहाँ पे behavioral therapies के according हम एरिया सेलेक्ट करते हैं. अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम है कि दे कैन नॉट कंफर्टेबल इन देयर जॉब, they feeling so, not comfortable with the authority persons, so there is need for assertiveness training. So this is the area related to the vocational vocation or the occupation. So this is the second step. Now third is choice of technique for treatment. When we understand the client problem better, what are the behind causes and which area is रिप्रेजेंटेड इन अ प्रॉब्लम. ठीक है, कौन सा एरिया है जो प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली. सो आफ्टर डिसाइडिंग द एरिया, आवर थर्ड स्टेप इज आइडेंटिफाई और द डिसाइड द ट्रीटमेंट मेथोलॉजी और द ट्रीटमेंट टेक्निक. सो चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट, हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट के लिए. दिस इज द थर्ड स्टेप जहाँ पे द चॉइस ऑफ टेक्निक फॉर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द therapeutic system in which the therapist has been trained. And however, even within this broad domain, the choices of techniques, timing of the technique and expectations of outcome of the therapy depend upon the clinical formulation. ठीक है, so many factors which are responsible for selecting the treatment technique. ठीक है, availability of the time, टाइप ऑफ द प्रॉब्लम. ठीक है, प्रॉब्लम किस टाइप का है, क्या टाइम ड्यूरेशन नीडेड है, क्या मनी है, मतलब मनी, टाइम एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग. जो थेरेपिस्ट है वो किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, किस फील्ड में ट्रेंड है, एंड जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की है, विच थेरेपी इज बेसिकली सुटेबल फॉर देयर प्रॉब्लम. सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल हियर फॉर सेलेक्टिंग द टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट. Okay, and lastly, the clinical formulation is an ongoing process and formulation may require reformulation as clinical insight are gained in the process of therapy, and usually the first 1 or 2 sessions yield enough clinical material for the initial clinical formulation. It is not advisable to start psychotherapy without the clinical formulation. ठीक है, दैट्स मीन विदाउट क्लिनिकल फॉर्मुलेशन कोई भी थेरेपी को अप्लाई करना इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज़ नॉट गुड. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रैपिड फॉर्मेशन. आफ्टर दैट हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं. देन व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द प्रॉब्लम, कॉजेज आइडेंटिफाई करते हैं. आफ्टर दैट डिसाइडिंग द एरियाज, वी प्लान द ट्रीटमेंट, we plan the treatment modality. After that, choosing the technique on the basis of so many factors, and after that we are actually applying the treatment. ठीक है, so this is the initial process which is known as the clinical formulation, where the therapist want to know or want to understand the client better, want to decide the whole planning for treatment according to the understanding of the problem. So this is all about the clinical formulation. ठीक है, this is the technical word which basically the persons use in a psychological terminology. This is all about today videos. Okay students, I think today's class is sufficient, and in next session we just started the psychodynamic theory, which is your first treatment theory, and this is very large. So this is all about today. Thank you so much class.